जैसे ग्रेड 5 B1 स्पीकिंग और लिसनिंग एग्ज़ाम के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है माय होम टाउन, पर्सनल टॉपिक है। और कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये इस पे वीडियो बनाएं, तो ये आपके सामने इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। लैंडमार्क्स, स्कूल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, शॉपिंग, पार्क्स। ये आप अपने अपने होम टाउन का यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं या सिर्फ माय होम टाउन भी लिख सकते हैं, और साथ में ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ इसके अलावा लिखना चाहते हैं तो भी इट्स फाइन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हों। बहरहाल जो कुछ ये मैंने लिखा है इसके ऊपर 1 बाय 1 हम सारों के क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर्स भी, ठीक है। तो सबसे पहले लैंडमार्क्स को करते हैं। मैं साथ में इंग्लिश में आपको आंसर्स भी बताता जाऊँगा ताकि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो आपको। लैंडमार्क्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द फेमस लैंडमार्क्स इन योर होम टाउन। तो आप उनके नाम बताएंगे कि देयर आर मैनी लैंडमार्क्स इन माय होम टाउन। फॉर एग्जांपल लंदन आई, द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और बिग बेन, एंड विंडसर कासल फॉर एग्जांपल। कोई भी नाम बता सकते हैं, आपका डिपेंड करता है कौन से होम टाउन है। मैंने तो लंदन की कुछ और विंडसर का बता दिया। व्हाट इज़ योर फेवरेट लैंडमार्क, तो आपका जो भी फेवरेट लैंडमार्क है उसका बताएंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट माय फेवरेट लैंडमार्क इज़ विंडसर कासल बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स ह्यूज एंड देयर इज़ सो मच ओपन स्पेस अटैच्ड टू इट। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू विजिट दैट प्लेस और लैंडमार्क। तो आप यूँ कहेंगे कि I only visit when the weather is fine, when the weather is nice, sunny, and mostly I like to visit it with my family. जो many people visit these landmarks, तो उसके जवाब में आप कहेंगे yes, many people visit these landmarks and they are very very special, and people love them. People come to see from different places. How do these landmarks help your hometown? तो लैंडमार्क्स जो भी होते हैं ज़ाहिर है उनसे बहुत सारा बिजनेस आता है, उनसे बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। तो आप कहेंगे कि these landmarks help my town in providing jobs to people and bringing more revenue into the town, and this way there is so much activity going on, and people not only get jobs but they also get entertainment. Okay, उसके बाद है are most of these landmarks free to visit? तो आप कह सकते हैं कि yes, some of them are free but some of them are not. You have to buy a ticket, but they are reasonable, very they are means kind of packages. They include many things, so that's how it is. ठीक है। अच्छा, लैंडमार्क्स जो भी होंगे ना वो आप अपने होम टाउन के हिसाब से बताएंगे। ये ना हो आप स्लाव में रहे हो और आप लंदन आई का बता रहे हो। मैंने जिस नाम कुछ इसलिए लिए हैं ताकि जनरल हो जाए, किसी हर एक के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके होम टाउन में एक स्कूल का टॉपिक भी हो सकता है कि स्कूल आपके होम टाउन में है, तो उस बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं कि इज़ योर होम टाउन फेमस फॉर स्कूल्स। तो आपका आंसर होगा येस, माई होम टाउन इज़ फेमस फॉर स्कूल्स। देयर आर सम वेरी गुड स्कूल्स इन माई होम टाउन। हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन योर होम टाउन। तो आप कुछ भी नंबर बता दें कि देयर आर ऑल टुगेदर 15 schools in my hometown. Which is the best school? कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कौन से स्कूल है, तो आप कह सकते हैं कि द किंग्स स्कूल इज़ द बेस्ट, और द क्वीन स्कूल इज़ बेस्ट, और whatever, ठीक है। आर देयर सेपरेट स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसका आंसर यूँ होगा कि देयर आर schools for boys, there are schools for girls, but at the same time there are some schools which are both boys and girls, so that's why this place, our town, is famous for schools, because they offer different opportunities for all sorts of people.
विच स्कूल डू योर चिल्ड्रन गो टू। अच्छा, आपके बच्चे अगर हैं तो आप कहेंगे कि माई चिल्ड्रन गो टू क्वींस स्कूल या किंग, जो भी नाम होगा, ठीक है। ये ना हो क्वीन स्कूल ही कह दें, पता चले उसके आपका स्कूल ही कोई नहीं। सो अगर बच्चे नहीं हैं तो कहें कि आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, सो बट आई वुड लव them to go to this school or that school, जो भी आपका पसंदीदा स्कूल हो। How important it is to have good schools in a town, ये important question है। इसका जवाब होगा कि it is very important to have good schools in a town, not only in my town but in every town, because it is the schools that makes a nation. Schools are very important to provide good education, and if children have good education they can become good citizens of this world and the country. उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज़ योर होम टाउन ऑफर इन टर्म्स ऑफ जॉब, यानी आपके होम टाउन में जॉब्स की क्या सिचुएशन है। तो आप कहेंगे कि माई होम टाउन इज़ स्पेशली फेमस फॉर offering so many job opportunities. It is a hub of jobs, ठीक है। What are some of the companies based in your hometown? तो को companies के नाम, मैं तो अभी चलो UK की companies के नाम बताता हूँ कि there are many companies, for example Marks and Spencer, Tesco's, Asda's, Sainsbury's, Lidl's, Aldi, and some other companies are based in my hometown. Do people from other places come for jobs in your hometown? Yes, of course. Many people come from neighboring towns, cities, to find jobs here because there are so many job opportunities here. What sort of jobs most people like to do in your hometown? Well, most people love to work in retail, but there are some people who prefer food industry because there are so many food outlets in our town. Do people prefer jobs or their own businesses? Well, people prefer jobs because there are so many job opportunities and they are good, highly paying jobs. But at the same time, there are some people who like businesses as well. What is your job and where do you work? तो इसमें आप जॉब से रिलेटेड कहें कि yes, I work in my own town and I work in Tesco's as a sales manager or as a customer services assistant, कुछ भी जो आपका जॉब हो। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो शॉपिंग के बारे में भी हो सकता है। आपने ज़ाहिर चूज़ करना है तो वही होगा, हो सकता नहीं है। इज़ योर होम टाउन फेमस फॉर शॉपिंग मॉल्स? येस, देयर आर सम वेरी गुड शॉपिंग मॉल्स in my hometown. Especially 3 of them are very big and very very famous. What big brands are based in your hometown? So big brands, Topman, Zara, other brands like Debenhams are based in my hometown. What do most people like to shop? Where do most people like to shop at? Well, most people like to shop at Oracle or the Queensland. ये shopping malls के नाम हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि but most people love to shop at Oracle because it offers a very wide variety of different shops and big brands under one roof. What is your favorite shopping mall? My favorite shopping mall is the Oracle. It is very very beautiful, very spacious. There are so many nice shops here, and yeah, people are very friendly, people are lovely. In terms of shopping, what is your hometown famous for? My hometown is famous for electronics and clothing actually. So yes, people from different places come to buy things. Okay, and how much money do you spend in shopping? Well, I spend around 50 to 100 pounds sometimes, I mean a week, or sometimes I don't spend any money at all, so it depends. When I need to spend, then I spend. उसके बाद parks का आ जाता है। So are there many parks in your hometown? Yes, there are many parks in my hometown, and my hometown is actually famous for its parks. Can you name some of them, please?
तो आपने कुछ के नाम बताने हैं कि देयर आर मैनी पार्क्स, फॉर एग्जांपल ABCD, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्क्स। तो ABCD तो ज़ाहिर नहीं कहेंगे, आप पार्क्स के नाम ही बोलेंगे। What are they famous for? Well, the parks in my hometown are famous for their natural beauty and their walks, yeah, especially, and their wildlife, especially. There are so many deers and peacocks in some of the parks. What is your favorite park and why? My favorite park is Queen's Park, and it is beautiful. It has got so many walking tracks, and I love birds, so there are so many birds in that park as well. Why do you think it is important to have parks in a town? Well, parks means outdoor activities and running, jogging, walking, fresh air. So it's very, very important in this life, which is full of stress. It's important for people to go out and to do some exercise, to walk, and sometimes meet new people and make friends. So that's why it is important to have parks. How often do you visit parks? Well, I visit every day. I try to go out for a walk every day for 30 minutes at least, but if the weather is nice, then I take my family over the weekends and spend some very nice time over there. Do you and your family prefer to go to the parks or do some other activities? Well, we prefer to go to parks because that is healthy, and we are not indoor people. We love to go out and do some nice activities, physical activities. So parks are the best places for us. Okay, so ये कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर भी मैंने दिए, आपको एक आइडिया देने के लिए दिए कि ये क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। और एक चीज़ याद रखें, बिल्कुल भी डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी आंसर हैं वही करेक्ट हैं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, और बगैर हेजिटेशन के पूछें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।